व्हाट इज यूटिलिटी? बेसिकली हमारा मकसद है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसके लिए हमने पढ़ा है डिमांड पार्ट, तो अब यूटिलिटी पढ़नी है जरूरी। यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी होता है किसी चीज में कितना ताकत है कि वो किसी के वांट को सेटिस्फाई कर सके। डिफरेंट हैव डिफरेंट यूटिलिटीज, some goods satisfy our more and more want, some have less power to satisfy our want. So it is the quality of a good, एक चीज में कितनी क्वालिटी है, quality of a good or service to satisfy human want, to satisfy human want, human want. और हम ये भी कह सकते हैं the quality of a good or service to satisfy human want is utility. एक चीज या एक सर्विस में, खदमत में कितनी ये क्वालिटी है कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके, कितना ताकत है। ऑल्सो ये हम कह सकते हैं इट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी इज इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर इन ए कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर इन ए कमोडिटी। कमोडिटी हो गया गुड और सर्विस, वांट सेटिस्फाइंग पावर इन ए कमोडिटी। एक चीज में कितना पावर है कि वो इंसान के चाहत को सेटिस्फाई कर सके, वांट को सेटिस्फाई कर सके। कोई चीज ज्यादा सेटिस्फाई करता है, कोई कम सेटिस्फाई करता है। सो इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर इन ए कमोडिटी। देन वी हैव द नेक्स्ट टर्म टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सो बेसिक ये बेसिक है। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर इन ए कमोडिटी। एक चीज में कितनी अहमियत है, कितना पावर है कि वो किसी चीज, किसी आदमी का ये वांट सेटिस्फाई कर सके। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन obtained by a consumer when he or she consumes a given amount of a good. It is total utility, sorry, it is total satisfaction. Total utility means total satisfaction. Total satisfaction obtained by a consumer. एक कंज्यूमर ने एक चीज कंज्यूम की है तो उससे उसको कितनी सेटिस्फैक्शन। टोटल सेटिस्फैक्शन obtained by a consumer when he or she consumes a given amount of a good. It is sum of marginal utility. It is sum of marginal utility. Marginal utility. Marginal utility होती है जब हम एक चीज इन पीस मील्स, इन पार्ट्स कंज्यूम करते हैं। एक पार्ट ने हमें कितना सेटिस्फैक्शन, अगर हम फॉर एग्जांपल एक सेब खाएंगे, उसने कितना दे दिया, दूसरे ने कितना दे दिया, तीसरे अलग अलग से, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। वो हम अभी पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सो टोटल यूटिलिटी इज, अगर मैंने एक सेब खाया, उसने 10 की सेटिस्फैक्शन दी, दूसरा खाया 8 की सेटिस्फैक्शन, तीसरा खाया 6 की सेटिस्फैक्शन, चौथा खाया 4 की सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी होती है 10 + 8 + 6 + 4, ये हो गई टोटल सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी। सो दिस इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ये है, इसकी ये है, इसकी है, तो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी होती है
sum of marginal utility is sum of marginal utility. That is, हम ऐसे भी कहते हैं total utility is summation of marginal utility. Sum of marginal utility. Marginal. Sum of marginal utility. Marginal. अगर हम example दे देंगे, for example, if first apple gives us utility of 10 utiles, second apple gives us utility of 8 utiles. The total utility is equal to 10 plus 8, that is utiles. दोनों को मिला के कितनी satisfaction हमने हासिल की, so इसको कहते हैं total utility. So total utility is total satisfaction we get or we obtain, or a consumer obtains when he or she consumes a given amount of a good, or total satisfaction we get when we consume given amount of a good, Then we have the marginal utility. Next is marginal utility. ये क्यों कट हो गया था? सर पता नहीं, नेट है गसा आप marginal utility. What is लिख लीजिए marginal. It is addition made to total utility. Addition made to total utility. Total. When extra unit of a good is consumed. Of a good is consumed. When extra unit of a good is consumed. For example, if the consumption of first unit gives us utility of 40 and second gives us 30, the marginal utility is 30. Yes, sir. So it is increase or decrease in the total utility of a good due to increase or decrease in the consumption of one more unit. Thus, it is increase or decrease. ये marginal increase भी हो सकती है, decrease जब हम decrease करेंगे किसी चीज की consumption, तो हमारी utility decrease हो सकती है. Increase or decrease in the total utility of a good due to increase or decrease. Due to increase or decrease. Decrease. Due to increase or decrease in the consumption. In the consumption of a good. In the consumption of one more unit of a good. In the consumption, increase or decrease in the consumption of one more unit of a good. Unit of a good. ठीक है? Yes, sir. So marginal utility होती है कि एक चीज को इंक्रीज करने, इसकी कंजप्शन को इंक्रीज जब किया तो कितनी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी है. दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n units minus total utility of n minus 1 unit. Total utility of n minus total utility of n minus 1. Marginal utility is change in total utility as a result of change in, for example, good, change in good X.
change in X. Yes. Where TU is total utility, X is, for example, good X, Good. good Yes, X, sir. delta is change. Delta is change. Change. Yes. अगर मैं थोड़ी ये एग्जांपल दे दूंगा आपको, ये टेबल में बनाऊंगा, ये दिखाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, क्या क्या यूटिलिटी ये दिखाएगा. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गुड कंज्यूमर, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूमर, एक चीज के कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए. मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. Total utility. यस. फॉर एग्जांपल मैंने पहला सेब खाया या आपने पहला सेब खाया. जब पहले हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. Yes, sir. जितना हम कोई चीज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी अहमियत जो है वो कम हो जाती है. Yes, sir. ठीक है. Yes. अगर हम पहला ड्रेस लाएंगे, अब जब हमारे पास कोई ड्रेस ही नहीं है तो पहला ड्रेस हम लाएंगे, वो ज्यादा प्यारा हमें लगेगा. दैट मीन्स इट विल गिव अस मोर यूटिलिटी. जब दूसरा लाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगी, वो कम प्यारा हमें लगेगा, वो कम सेटिस्फेक्शन. थर्ड हम लाएंगे तो वो उससे कम जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी एज वी इंक्रीज आवर ड्रेसेस. फॉर एग्जांपल हमने पहला ये सेब खाया, पहला सेब खाया, फॉर एग्जांपल इट गिव्स अ सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूटिलिटीज. सो यूटिलिटी हियर अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज. सो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इज 1. पहला सेब हमने खाया, एप्पल है, तो 10 की यूटिलिटी हमें मिल गई इससे, तो 10 यहाँ टोटल यूटिलिटी भी है. हियर द फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी इज फर्स्ट टोटल यूटिलिटी. अब जब सेकंड सेब हमने खाया तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, उतना हमें प्यारा नहीं लगेगा जितना पहला Yes, था. sir. तो टोटल यूटिलिटी बन गई 10 + 8, इट इज 80. सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी 10 + 8, Yes, sir. 3, 6 फॉर एग्जांपल. अब सम करो मार्जिनल यूटिलिटी का, 10 + 8 + 6, 18 + 6 is 24. So this is marginal utility, this is total utility. Fourth, इसी तरह for example 4, it is 28. So this is how to know about the marginal utility and total utility. Yes. तो उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा लॉ है, उतना छोटा भी नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वो उठाएंगे या इतना ही पढ़ेंगे आज? सर वो भी कितना टाइम है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सर इतना ही पढ़ेंगे? ये भी खत्म करेंगे, ये छोटा ही है. तो ठीक है फिर. ये छोटा है, उतना ज्यादा बड़ा नहीं है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बेसिकली हमें पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसके लिए ये जरूरी है. तो नेक्स्ट लिख लीजिए ऑफ लॉ ऑफ, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. सर ये दिखाई नहीं दे रहा है. मार्जिनल, अभी दिखाई दे, मार्जिनल यूटिलिटी. मैं एडजस्ट करूंगा ना ये बोर्ड. हो गया? यस सर. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी होता है जितना हम ये कोई चीज खाते हैं तो उसने कितनी सेटिस्फेक्शन हमें दे दी. एज वी इंक्रीज द डोजेस, एज वी इंक्रीज द कंजप्शन, हर एक डोज या हर एक
लेवल ऑफ कंजप्शन कितनी हमें सेटिस्फेक्शन देती है, दैट इज मार्जिनल। marginal. डिमिनिशिंग मार्जिनल होती, डिमिनिशिंग मींस डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग मींस डिक्रीजिंग। Decreasing. मार्शल कहता है देयर इज ऑलवेज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एवरी गुड, फॉर एवरी गुड देयर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मींस यूटिलिटी डिक्रीजेस, जो हम अभी बताते थे, जो हम अभी बताते थे। हालांकि उसमें हमें ये नहीं पढ़ना था कि वेदर यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो उसमें में भी हमने डिस्कस किया ये। सो ये मार्शल बताता है, इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस इन आवर कॉमन लाइफ, वी सी as we go on increasing the consumption of a good, the satisfaction decreases, the utility decreases. So according to Marshall, when we consume more and more of a good, we get less and less satisfaction after every unit. So according to Marshall, according to Marshall, this concept was given by Marshall, states that the more we have of a good, the less we want to have more of it. The more we have of a good, less we want to have more of it. अगर हमें कोई चीज ज्यादा हासिल हो जाए तो हम चाहते हैं कि अब ये हमें नहीं मिलना चाहिए, हैं? Yes, sir. इस पर ज्यादा गसर. It means thus this law states that as we consume more and more of a good, as we consume more and More of a good. The satisfaction or the utility or satisfaction decreases. Decreases. Yes, sir. Decreases. That is marginal utility decreases. Marginal Utility decreases. So when we increase the consumption of a good, its marginal utility decreases. Thus, when we increase the consumption of a good, its marginal utility diminishes or decreases. So this is called a law of diminishing marginal utility. What is law of diminishing marginal utility? The law of diminishing marginal utility states that as we increase the consumption of a good, we get less and less satisfaction, or marginal utility decreases when we increase the consumption of a good. So this law can be explained with this number of units. Number of units consumed. We have marginal utility. We have total utility. Yes, sir. Total utility. जिस तरह हमने अभी बनाया वो utility, जब हम for example first unit, second, third, 4, 5, 6, ठीक है? जितना Yes, हम sir. किसी चीज की कंजप्शन बढ़ा देंगे तो उसकी जो यूटिलिटी है, अहमियत है, वो कम हो जाती है. For example, we Yes, have sir. 15 for first dose, we have 15 utilis, then it decreases to 12, then it 12. decreases to 10, 6, 2, 0. ठीक है? Yes, sir. कभी ऐसा भी टाइम आता है जब हम चाहते नहीं कि ये चीज हमारे पास आए, अब हमारे पास बहुत ज्यादा है, मैं जरूरत वो ये क्या है, ऐसा था, है? तो टोटल यूटिलिटी किस तरह 15
15 plus 12, 27, 37, 43, 45, and 45. So when marginal utility is 0, the total utility is maximum. When marginal utility is 0, total utility is. So from this diagram, from this marginal utility curve, from this marginal utility table, we can get marginal utility curve, diminishing marginal utility curve. So हम कर्व भी निकाल सकते हैं, diminishing marginal utility curve. Yes. ये है डायग्राम. ये हो गया? Yes, sir. क्या मैं बनाऊंगा? OX, OY. OX shows number of units consumed. OY shows marginal utility. Marginal utility, that is MU. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, for example, 7. Marginal utility क्या 15 तक है? 5, 10, 15. 5, 10, 15. ठीक है? जब हमने पहला डोज ले लिया, पहला जो यूनिट ले लिया, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 15. Here it is 15. For example, point A. फिर 12 से नीचे थोड़ा है B. फिर 10 C, 6 D, 2 शाबाश 2 E, 6 0 and 0. 0 F. ठीक है? तो Yes, sir. मिलाओ आप. ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, हम इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. हाँ, यहाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, डिमिनिशिंग Marginal utility curve. marginal utility curve, diminishing marginal utility curve. तो आपके लिए घर में काम है, मैं देता हूं, आप घर में बैठ के ये लिखिए from the above table and diagram. ठीक है? Yes, sir. इसको हम लिखेंगे नाम MU करो है, MU करो. Yes, sir. घर में आप कॉपी पे लिखना है नीचे, जो आपका ये ड्राफ्टिंग भी ठीक करेगा, how to make the sentence. From the above table and diagram, when we consume first unit of a good, the marginal utility is 15 and we get point E. Yes, sir. When we increase the consumption from 1 to 2, the marginal utility decreases from 15 to 12 and we get point B. When we consume third unit, the marginal utility still decreases 10. to 10 and we get point C. We see as we increase the consumption of the good, the marginal utility decreases and we get different points like D, E, F, etc. By joining these points, after joining these points, we get a curve MU, which is called a diminishing marginal utility curve, which is a downward sloping curve. It is a downward sloping curve. Downward
sloping curve, we shows the marginal utility decreases as consumption increases, as consumption of a good increases, as consumption of a good increases, as consumption of a good increases. So this is all about the diminishing marginal utility curve or law of diminishing marginal utility. Tomorrow we will discuss about the consumer's equilibrium. Thank you. Okay. Okay, sir. Allah Hafiz. Koi question? No, sir. Okay.